स्टार्ट करूँ और लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 हमने वी हैव फिनिश द यूनिट नंबर 1, ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। नाउ वी विल सी द यूनिट नंबर 2। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 2। ओके, today's date is 19th May 2021। as per as the syllabus of unit 2 is concerned, so this is the syllabus. Okay, this is the syllabus of unit number 2, this is the content of unit number 2. So we have to start with constraints, definition, its causes, effects, then realizing constant on the system, difficulties introduced by the constraints. So maximum half of the unit is related to the constraint. Okay, introduced by the imposing constraint, example of constraint, then we have to study the generalized coordinates, then we have to study the Lagrange's equation. We already studied the short lecture of Lagrange's. I already did the short lectures of Lagrange's equation in lecture number 6 of unit number 1, right? You can go the recorded lecture of it, so you can know about the Lagrange's equation. Okay, so we have to learn the Lagrange's equation in detail here in unit number 2, as well as linear, generalized potential, generalized coordinates, momenta, gauge function, gauge invariance. We have to cover all these topics. That is the content of the unit number 2. So we will start with the constraints. Okay, so we will start with the very important topic, constraints and type of constraint we will see. Okay, so first of all we will see what is constraint. Okay, so before going into the detail, you have to know about the examples. ओके, सो एग्जाम्पल्स देके समझेंगे हम कांस्टेंट होता क्या है और कांस्टेंट बोलते किसको है, व्हाट आर दी कांस्टेंट्स. ओके, सो आई एम गिविंग वन एग्जांपल. इफ सपोज समवन इज राइडिंग अ साइकिल ऑन द ग्राउंड एंड ग्राउंड इज ओपन ग्राउंड. ओके, इफ सम स्टूडेंट और some child is riding a bicycle in open ground, so he has liberty to move any direction. He can move left, right. Okay, because ground is empty. Okay, and ground is open, so he can ride the bicycle in every direction in the ground. So there is no limitation to move the bicycle in that ground, so that child can ride the bicycle in every direction if he is riding the bicycle, if he or she is riding the bicycle in open ground. Okay, so there is no limitation. He can move the bicycle in every direction. Okay, so the opposite to that, if suppose train is moving on railway track. Okay, so train is moving on railway track, so there is a restriction on train. Okay, there is no restriction on the child when he is riding the bicycle in open ground. He can move in every direction. But in case of train, if train has a restriction to move along the track only, in forward direction only, along the track only, so there is a restriction to the train, there is a restriction to the motion of the train, but there is no restriction to the motion of the bicycle when the child is riding the bicycle in the ground, in the open ground. So if the motion under restriction, if the motion happens under restrictions, then this called constraint. Okay, it means that restriction to the motion of the body, of the object, okay, of the particle. If we are applying certain restriction towards the motion of the particle or motion of the object, these restrictions, these limitations are called constraint. So trains, the motion of trains is constrained motion, because we have restricting the motion of train along the track only. Train cannot move in every direction. Train can only move on the track in forward direction, so the motion of train is constrained motion. But the motion of that boy when he is riding the bicycle in open ground, the motion of the bicycle is not constrained motion, that is non-constrained motion, because that boy can ride the bicycle in every direction in the ground. Okay, so this is the simple example. Another example I can like to give you. If suppose bird is flying in the air. Okay, पक्षी उड़ रहा है. ओके, पक्षी उड़ रहा है एयर में, खुले आसमान में उड़ रहा है पक्षी.
means bird is flying in open sky, so bird can fly in every direction. So there is no constraint. There is no constraint. Bird can fly in every direction because because it is in open space. Okay, open space means in open sky it can fly in every direction. So there is no constraint motion. There is no constraint to that motion. That motion is free motion. There is no constraint. But if I catch that bird and I keep that bird in closed room. If suppose पक्षी को पकड़ लिया, पक्षी को पकड़ा और रूम के अंदर डाल दिया, ओके 10 बाय 10 के रूम, 10 बाय 10 के रूम में 10 फीट बाय 10 फीट के रूम में उसको मैंने बंद कर दिया पक्षी को, तो पक्षी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट रूम. So we are applying constraint to the motion of that bird. It means we are trapping that bird and keeping it into the room so that bird cannot go outside the room. So we are constraining the motion, we are restricting the motion of that bird inside the room so that that bird is flying along the wall, along the width of the room or height और width से ज्यादा वो उड़ ही नहीं सकता क्योंकि रूम पूरा पैक है. रूम के अंदर पक्षी को तुमने रख दिया, पक्षी ज्यादा से ज्यादा कैसे उड़ेगा, हाइट जितनी हाइट है वहां तक जाएगा या जितनी रूम की विड्थ है वहां तक उड़ेगा, उसके बाहर तो निकल ही नहीं सकता. इट मीन्स दैट बर्ड इज फ्लाइंग, ओके, बट बर्ड इज फ्लाइंग अंडर अ कंस्ट्रेंट मोशन. मतलब हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए टुवर्ड्स द मोशन ऑफ दैट बर्ड. That restrictions are constraint, but if bird is flying in open space, open sky, there is no constraint, so that bird's motion is free motion. Okay, so there is difference between free motion and constraint motion. Constraint motion means if we are applying or if we are imposing certain conditions, certain restriction to the motion of the object, that is called constraint. Okay, I have given two examples. Okay, one example is comparing the motion of the train and motion of the boy riding a bicycle in open ground. Second, I have given an example, motion of the bird in open sky, and same bird if moving inside the room, there is the constraint. Okay, these are the two examples. One more example I can give in general example. If suppose students are sitting in the room, if students are sitting in the room, there is no teacher नहीं है, student अगर रूम के अंदर बैठे हुए हैं, so that students discipline नहीं रहेगा. Students can move here and there, can talk with each other, बहुत सारी चीजें students करेंगे because there is no constraint. उनको खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बातें कर सकते हैं, क्लास के अंदर झगड़े कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ओके, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग इनसाइड द क्लासरूम. But as soon as the teacher come, okay, that student will become more disciplined and they will sit at exactly that place and they will look at the teacher because the teacher is applying a particular constraint to that students, so they are behaving under the action of teacher. Okay, they are behaving under the constraint of the teacher. टीचर नहीं था तो इधर उधर कर रहे थे, टीचर आने के बाद ऑलमोस्ट वो ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दे रहे, टीचर की तरफ ध्यान दे रहे. मतलब मोशन ऑफ द स्टूडेंट इज कंट्रोल्ड बाय द टीचर. इट मींस दैट टीचर क्रिएटिंग कंस्ट्रेंट टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द स्टूडेंट, सो दैट इज द कंस्ट्रेंट. ओके, विद दिस थ्री एग्जांपल्स आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रेंट? द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इज द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ द सिस्टम. मोशन ऑफ द सिस्टम को हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया. अरे भाई, एक पार्टिकल मूव हो रहा था, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जेड डायरेक्शन. ये पार्टिकल इज मूविंग इन फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मींस एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन. भाई पार्टिकल कहीं पर भी मूव हो रहा है, इट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन. बट आई एम फोर्सिंग टू दैट पार्टिकल टू मूव इन एक्स डायरेक्शन ओनली. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं. वाई और जेड डायरेक्शन मैंने ब्लॉक कर दिया. सो if that particle move only x direction, that particle can move in three directions, x direction, y direction and z direction. But
I am applying the constraint, or I am forcing that particle to move in x direction only. So it means that that particle will move under a constrained motion in x direction. So that motion of the particle when restrict in particular direction, in particular dimension, so that motion of the systems are called constraints, and the motion is called constraint motion. Okay, so what is the definition of constraint? The limitation on the motion of the system. मोशन ऑफ द सिस्टम को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और द कंडीशन विच रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम, द कंडीशन विच रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम कॉल्ड constraint. The limitation on the motion of the system is called constraint, and the motion under the constraint is called constraint motion. The motion is said to be constraint motion. If मैं किसी भी चीज का if I am restricting the motion of the system, motion of the particle, motion of the object, or motion of the body, if I am restricting or I am imposing certain conditions कि भाई तू यहीं पे पक्षी को पकड़ा, पिंजरे में डाला, तू यहीं के अंदर ही रह, बाहर मत निकल, it means that we are imposing constraint to the motion of the bird, because if bird is used to fly in the open sky, it can move in any direction, but पक्षी को पकड़ के पिंजरे में डाल दिया. Okay, I am catching the bird and just keeping into that particular cage. It means that we are restricting the motion of the bird only inside the cage. Okay, so that is constraint motion. So constraint motion क्या होता है? The conditions or the restriction to the motion of the system is called constraints, right? I hope you understood the concept of constraints. Okay, so the one general example I am giving, if suppose gas molecules, I am trapping the gas molecules or gas molecule inside the container. So gas molecule cannot go outside. Okay, because I am trapping or I am keeping that gas molecules inside the container. So the gas is free. So gas molecule can be free and can move any direction, but I am keeping that gas molecules in a container. It means it will collide with the walls of container, but it will not go outside the container. It means we are applying certain conditions towards the motion of this molecule. For example, gas molecules in the container. If suppose this is the container and these are the gas molecules. So these gas molecules cannot go beyond this container's wall. It will move here and there inside the container and it will collide to the walls of the container, but it will not go outside the container. It means that we are restricting the motion of the gas molecule within the container. कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन को हम लिमिट कर रहे हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ constraints. Okay, gas molecules within the container. Okay, so this is the concept of constraint, this is the definition of the constraint, and this is the example related to the physics. I have given general examples also. Okay, so this is the constraint. Okay, now we will see types of constraint. Okay, so now we will see types of constraint. It means classification. constraint कौन कौन से types के होते हैं. Okay, what are the types of constraint and how the constraint classify, on the basis of what we will see. Okay, so first classification has two types of constraint. In first classification system there are two types, scleronomous and rheonomous. Okay, scleronomous constraint and rheonomous constraint. What is the difference between scleronomous and rheonomous? Scleronomous means the constraint do not explicitly depend on time. It means जो constraint, the constraint forces or constraint which do not depend on the time से कोई लेना देना नहीं है. ऐसे कंस्ट्रेंट जिसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है उसको बोलेंगे स्क्लेरोनॉमस. इफ दैट कंस्ट्रेंट डिपेंड ऑन द टाइम देन दे आर कॉल्ड रियोनॉमस. अब व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट? Okay, how the constraint depend on the time and how can we classify the constraint, or how can we identify whether the constraint depend on the time or it is not independent of the time. Okay, if the constraint depend on the time clearly, explicitly means clearly depend on the time, that is scleronomous. If the constraint do not depend on the time, do not clearly depend on the time, do not depend on the time, that is scleronomous. And the constraint if depend on the time, that is rheonomous. Okay, so how to identify the constraint whether it is depend on the time or not?
Okay, for famous for the example, there are two examples. One is rigid body and other is simple pendulum with fixed support. As rigid body, the body which cannot be deformed, that is called rigid body. Okay, rigid body means the body, tough body that cannot be deformed. For example, stone, पत्थर ले लिया. Okay, if suppose I am taking stone, okay, so that stone is rigid body. Okay, because if I throw that stone onto the ground, that stone cannot be broken or that particle cannot be separated. That particle, the inside that stone, the particles are in very tight. The particles hold each other in very tightly manner. Okay, so in rigid body the particles cannot be separable, and in rigid body the particles holds each other with a strong forces. Okay, so if suppose rigid body, if I am moving that rigid body, their motion or their particle motion is constant and they did not depend, the motion of that particle inside that rigid body do not depend on the time. Okay, this is the example, rigid body. And second example is simple pendulum with fixed support. If I already told one problem related to the simple pendulum. Okay, if suppose the simple pendulum is hanging, okay, hanging to the rigid support. Okay, so length of pendulum is fixed, right? Length of pendulum is fixed. So if pendulum is set into the oscillation, if I am giving a certain motion, oscillatory motion, and the simple pendulum is in simple harmonic motion, okay, so in that particular motion, okay, the simple pendulum's motion do not depend on the time because the length is constant. The length of pendulum is constant, and that pendulum is set into the oscillation and in moving in simple harmonic motion. So that motion or that velocity of the pendulum or that motion of the pendulum or oscillation of the pendulum do not depend on the time. Time कुछ भी हो, टाइम के साथ साथ वो मोशन भी कांस्टेंट ही रहेगा. टाइम अगर जाए तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ टाइम स्पेंड हो, टाइम कितना भी हो, ओके, दो मोशन होगा जो पेंडुलम का, वो कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम विद फिक्स सपोर्ट. एंड इफ वी take the example of Riemann constraint, the Riemann constraint means the constraint which depend on the time. For example, bead sliding on moving wire. If wire is moving, और वायर के ऊपर क्या रख दिया मैंने, मणि को रख दिया. बीड मतलब एक मणि है, जैसे गले में कुछ हार पहनते हैं उसमें मणि रहता है, दैट इज कॉल्ड बीड. Okay, if wire is moving and I am keeping bead on that sliding wire is also moving and bead is also sliding on wire, because wire is also moving, and if I keep bead on that wire, so bead is also sliding. It means bead is also in motion, wire is also in motion. It means that it depends on the time, because if wire is set into the motion with respect to time, wire is also moving and as well as the bead also sliding on the moving wire. So their constraint or their force of bead and moving wire explicitly depend on the time. That is the example of Riemann constraint. But in case of scleronormous constraint, सिंपल पेंडुलम का लेंथ फिक्स होता है, इसलिए पेंडुलम एक जगह से दूसरे जगह लेफ्ट टू राइट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही मूव कर सकता है. लेकिन अगर वायर भी मूव हो रहा है एंड इसके ऊपर हमने कोई मणि रख दिया, बीट, वो भी मूव हो रही है, तो वायर भी डिस्प्लेस होगा, मणि भी स्लाइड होगी. इट मीन्स दैट देयर मोशन इज explicitly depend on the time. Okay, the constant which do not depend on the time, scleronormous. The constant which depend on the time is Riemann. Okay, so this is the first classification system. Second classification is constant may be holonomic and non-holonomic. Okay, constant can be holonomic and non-holonomic. So what is holonomic? The constant independent on the velocity. कंस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी. अगर कंस्टेंट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है, सो दे आर होलोनॉमिक. इफ दे एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, if they are function of the velocity, they are irreducible function of the velocity. Irreducible function means cannot be made simplified.
ओके, एफ कंस्ट्रेंट के फंक्शन को वेलोसिटी के टर्म्स में सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, इट मींस दैट कंस्ट्रेंट्स आर डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, दे आर कॉल्ड नॉन होलोनोमिक, एंड इफ द कंस्ट्रेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी दे आर कॉल्ड होलोनोमिक। तो सेम जैसे यहाँ पे टाइम पे इंडिपेंडेंट थे तो स्क्लेरोनॉमस, टाइम पे डिपेंडेंट थे तो रियोनॉमस, उसी तरीके से वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट है तो होलोनोमिक, वेलोसिटी पे डिपेंड है तो नॉन होलोनोमिक, एंड एग्जांपल्स आर सेम। Okay, so examples are same. If suppose simple pendulum with rigid support, simple pendulum with rigid support. Okay, because if the simple pendulum is hanging to the particular rigid support, it is moving from to and fro, left and right, and its length is fixed. Its length is fixed. It means it don't depend upon the velocity. Velocity कुछ भी रहो, उसका मोशन तो कांस्टेंट रहेगा बिकॉज लेंथ फिक्स है। लेकिन अगर मान लो स्पेयर रोल हो रहा है विदाउट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, या फिर पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर किसी को पार्टिकल रखो तो पार्टिकल कैसे मूव होगा, विद इन द बॉक्स मूव हो सकता है, इनसाइड द बॉक्स या बॉक्स के वॉल तक जा सकता है, तो उसका जो वेलोसिटी, उसका जो मोशन है, उसका जो फोर्स है वो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, सो द एग्जांपल, द कांस्टेंट विच आर डिपेंड ऑन द वेलोसिटी आर कॉल्ड non-holonomic, and the constant which are independent on the velocity are holonomic, and the constant which are depend on the time are rheonomous, and the constant which are do not depend on the time are called scleronomous. Okay, so these are the two classification systems, scleronomous, rheonomous, holonomic, non-holonomic. Again there are again two classification systems. We will see that this third classification system, constant can be bilateral and unilateral. Okay, so what is bilateral constraints? The constraint which can be represented in the form of equation. Okay, if the constraint represent in the form of, if the constraint presented in the form of equation, they are called bilateral constraint. Okay, so I am giving you the simple example, that is rigid body. I already told that rigid body means the shape of the body cannot be changed. The hard body, their particles and their particles are held together by strong forces, they cannot be separable, the body cannot be deformable, we cannot deform that body, we cannot change the body shape, that is called rigid body. If I consider the stone, okay, stone is hard, stone is rigid, I cannot change the shape of the stone because the particles inside the stones are held together by strong forces. Okay, so if the constraint are represented in the form of equation, ओके, दे आर कॉल्ड बायलैटरल कंस्टेंट। फॉर एग्जांपल रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो दिस इज रिजिड बॉडी, दिस व्हाइट कलर इज रिजिड बॉडी, एंड रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ number of particles, and these red circles are the number of particle. If suppose this red circle is ith particle, so its position vector is ri. If suppose this red circle is jth particle, its position vector is rj. Okay, and the distance between ri and rj is cij. सो दिस डिस्टेंस कैन नॉट बी चेंज। बॉडी रिजिड होने के कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे, पार्टिकल्स रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस। वो तुम बॉडी को कहीं पे फेंको, इधर करो उधर करो, वो डिफॉर्म नहीं होगी। सो जिस इनसाइड द पार्टिकल, इनसाइड दैट रिजिड बॉडी, द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज फिक्स्ड। पार्टिकल्स की पोजिशन चेंज नहीं होगी, पार्टिकल्स की पोजिशन फिक्स होगी। सो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स होगा। Okay, if suppose this is ith particle and its position vector is ri, this is jth particle and its position vector is rj, so the distance between ri and rj particle is cij. It means that ri minus rj is cij. Cij is the distance between ri and rj. Okay, Cij is distance between Ri and Rj. Ri means position vector of ith particle, Rj means position vector of jth particle, and the distance between two particles is Cij. It means that Ri minus Rj is equal to Cij. So this can be represented in the form of, दिस कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जहां इक्वल का साइन लगा है उसको इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी इक्वेशन लिखो तुम इक्वल का साइन लगाते हो वहां पे। ओके, सो दिस कंस्ट्रेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। So equation means the distance between two particles cannot be changed. Distance between two particles are equal to Cij. The particle distance cannot be changed. It means that the rigid body cannot be deformable. उसका shape और size change नहीं होगा। उसके अंदर के जो particles है same distance
पोजीशंस पे रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, तस से मस नहीं होंगे, मतलब हिलेंगे नहीं, जहां है वही रहेंगे. सो दीज आर द टू पार्टिकल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज Cij. So Ri minus Rj can be represented in the form of this equation. If suppose the equation of the rigid body can be written in this form, Ri minus Rj is equal to Cij, it means that the constraint can be represented in the form of equation. So this constraint is called bilateral constant. This constraint is called bilateral constant because this we can represent it in the form of equation. Equation किसको बोलेंगे? Equation ऐसी चीज होती है जहां पे इक्वल का साइन लगा होता है, कोई भी, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन बिकॉज इक्वेट का साइन लगा है. तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस इक्वल साइन इज देयर. So any of the expression can be written in the form of with the equal sign, that is called equation. So the constraint which can be represented in the form of equation, that is the rigid body. Rigid body, the distance between two particles can be represented in the form of equation Ri minus Rj is equal to Cij. So this the body, the motion inside the rigid body or the constraint of rigid body is bilateral. So this is the bilateral constraint. Okay, now the unilateral constraint means the constraint are expressed in the form of inequality. मतलब इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, inequality मतलब जो इक्वल नहीं है, that is inequal. Okay, so the constraints are expressed in the form of inequalities, they are called unilateral, and the constraint which expressed in the form of equation, that is bilateral, and the constraint which are expressed in the form of inequality, that is called unilateral constraint. Example देखते हैं तो motion of molecules in the gas container और motion of the particle on the surface of sphere under gravity. तो motion of molecule in gas container का example लेते हैं, कैसे inequality के form में represent करते हैं. देखो ये है, ये suppose this is the container, inside that gas molecules are present. Okay, this is the square container का width कितना है? A. The width of the container is A and height of the container is B, and the molecules are present inside that container. Okay, the molecules present inside that container, gas molecules, and the container's width is A and height is B. So molecules can move inside the container or it can reach अप टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो जो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर है वो कहां तक जा सकते हैं? वॉल तक जा सकते हैं. वॉल्स के बाहर जा सकते हैं क्या? नहीं. इनसाइड में रह सकते हैं या वॉल तक जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ द मॉलिक्यूल इज मूविंग इन a direction, the molecule is moving in width. Okay, the molecule is moving towards width, this is the width A. Okay, so if molecule is moving along the width of this container, so it can go up to A because the width of the container is A. So molecule can go up to the A length. Okay, that is width. Or if suppose molecule is moving vertically, so it can move up to the height B, not more than that B. So if molecule is moving in x direction, it can go up to the A length. It can go up to the A distance. Okay, so this x is less than or equal to A means the molecule in x direction, it can go up to the A length और लेस देन है. जैसे मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो लेस देन है, यहाँ तक पहुंचा वॉल तक तो A तक पहुंच जाएगा. तो मॉलिक्यूल A से बाहर जा सकता है क्या? नहीं, बिकॉज विड्थ ऑफ द कंटेनर इज A. इट कैन रिमेन इनसाइड लेस देन A और अप टू द A तक जा सकता है, A से बाहर नहीं जा सकता. A से बाहर नहीं जा सकता मतलब इफ इट इज मूविंग अलोंग द विड्थ, इट कैन गो अप टू द A डिस्टेंस, नॉट मोर देन A, और इट कैन रिमेन लेस देन A. इनसाइड में है तो लेस देन A, वॉल तक गया, विड्थ तक गया तो A तक जा सकता है. सो इट कैन मूव इन x डायरेक्शन, ओके, दैट इज लेस देन A और इक्वल टू A तक जा सकता है या लेस देन तक जा सकता है. तो इस साइन को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी. इक्वल का साइन है क्या? नहीं, लेस देन का भी साइन है यहाँ पे. सो दिस साइन इज इनइक्वालिटी. वैसे ही मॉलिक्यूल इन B डायरेक्शन, इफ इट इज मूविंग अलोंग द हाइट, इट कैन मूव अप टू द B, नॉट मोर देन दैट B और लेस देन B. अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है, हाइट के अलोंग मूव हो रहा है, अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे है सो इट इज लेस देन B, बट मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुंच गया तो इट इज अप टू B. सो इन Y डायरेक्शन, इन हाइट, ओके, अलोंग द हाइट इन Y डायरेक्शन, द मॉलिक्यूल्स मूव लेस देन B और इक्वल टू B, लेस देन B और इक्वल टू B. Okay, so this sign less than or equal to, okay, less than or equal to, that is called inequality sign. The motion of the molecule inside that container can be represented in the form of inequality, that is the equal sign है क्या यहाँ पे? नहीं, inequality है, less than or equal to है, less than or equal to,
टोटल इक्वल का साइन है क्या? नहीं. सो दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इनइक्वालिटीज. तो इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज. एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए. मॉलिक्यूल ए तक जाएगा, ए से बाहर नहीं जा सकता, या लेस देन ए. मॉलिक्यूल हाइट के अलॉन्ग मूव हो रहा है तो बी तक जा सकता है, बी के बाहर नहीं जा सकता. सो वाई इज लेस देन और इक्वल टू बी. सो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी इफ वी स्टडी द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड द कंटेनर. So the motion of the molecule is constrained in x direction, that is x is less than or equal to a. It constrained in y direction, that is less than or equal to b. So this is inequalities. The sign is inequality sign. So the motion of the molecule inside the container can be represented in the form of inequalities. So this is nothing but the unilateral constraint, because these constraints are expressed in the form of inequality. Inequality का साइन है ये, लेस देन और इक्वल टू. लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी का साइन है, और इनइक्वालिटी के टर्म्स में अगर कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट किया, तो दैट इज कॉल्ड यूनिलैटरल. ओके, सो द कंस्ट्रेंट, if I am presenting the constant in the form of equation, okay, that is bilateral. In the form of inequality, that is unilateral. Bilateral का एग्जांपल दिया था, रिजिड बॉडी में डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर सेम, Ri minus Rj is equal to Cij. Okay, that is constant. Equal sign is there. That's why that is equation. So the constants are in the form of equation, are bilateral. If the constant are in the form of inequalities, that is unilateral. तो ये हो गया तीसरा सिस्टम क्लासिफिकेशन का. पहला सिस्टम क्लासिफिकेशन का क्या था? स्क्लेरोनॉमस एंड रियोनॉमस. स्क्लेरोनॉमस मीन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम, रियोनॉमस मीन्स डिपेंड ऑन द टाइम. दूसरा सिस्टम था होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक. होलोनॉमिक मीन्स it is independent on the velocities. It is independent on the velocities. Okay, and non-holonomic means it is depend on the velocity. It is the irreducible function of the velocities. Okay, तो टाइम के रिस्पेक्ट में दो, स्क्लेरोनॉमस एंड रियोनॉमस. वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दो, होलोनॉमिक एंड नॉन होलोनॉमिक. और इक्वेशन और इनइक्वालिटी, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो बायलैटरल कांस्टेंट. ओके, इनइक्वालिटीज के फॉर्म में मतलब इक्वल साइन ने लेस देन और इक्वल है तो यूनिलैटरल कांस्टेंट. और जो चौथा टाइप होता है, चौथा जो सिस्टम होता है, दो टाइप्स, कंजर्वेटिव एंड डिसिपेटिव. कंजर्वेटिव मतलब इफ एनर्जी इज कंजर्व्ड, if the total energy of system is conserved while performing the constant motion, then that constant is called conservative. Or if the energy is not conserved, total energy of the mechanical system is not conserved while performing the constant motion, then the constants are said to be dissipative. Okay, कंजर्व हो रही है एनर्जी तो कंजर्वेटिव, एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है तो डिसिपेटिव. फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, फिर से अगेन सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल दे रहा हूँ. सिंपल पेंडुलम अपने ऑसिलेशन में कांस्टेंट मोशन में मूव करता है, ऑसिलेट करता है, तो उसका एनर्जी कंजर्व होती है. ओके, बिकॉज लेंथ फिक्स होती है. लेंथ फिक्स होकर एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच है, लेंथ फिक्स है तो उसका मोशन फिक्स होता है, मोशन फिक्स है तो उसकी एनर्जी कंजर्व होती है. लेकिन इफ सपोज डिसिपेटिव है, अगर मान लो लेंथ फिक्स नहीं है पेंडुलम की और लेंथ चेंज कर रहे हो, कम ज्यादा लेंथ कर रहे हो, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? नहीं, बिकॉज लेंथ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है. लेंथ कम ज्यादा हो रही है तो मोशन भी चेंज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी क्या? नहीं. ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? कंजर्वेटिव कांस्टेंट का एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम विद रिजिड सपोर्ट, एंड डिसिपेटिव कांस्टेंट का एग्जाम्पल क्या है? पेंडुलम विद वेरिएबल लेंथ. लेंथ चेंज कर रहे हो पेंडुलम की तो मोशन चेंज होगा, मोशन चेंज होगा तो एनर्जी कंजर्व होगी क्या? नहीं. ओके, सो द कांस्टेंट इन विच टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके, व्हाइल परफॉर्मिंग द कांस्टेंट मोशन, दे आर सेड to be conservative constraint. Okay, if total energy of mechanical system is not conserved while performing the constant motion, they are said to be dissipative constraint. इसका मतलब pendulum with variable length. ओके, वेरिएबल लेंथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज हो रहा है तो मोशन चेंज होगा, मोशन चेंज होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम की फिक्स है तो मोशन कांस्टेंट रहेगा, मोशन कांस्टेंट रहेगा, ऑसिलेशन कांस्टेंट रहेंगे, तो कांस्टेंट क्या होंगे? कंजर्वेटिव. तो समझ में आया? कंजर्वेटिव मींस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, डिसिपेटिव मींस टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द कांस्टेंट मोशन. Okay, so these are the types of the constraint. So we have studied the classification, that are types of the constraint. So there are 4 classification system on the basis of time, velocity, in the basis of equation, and on the basis of mechanical energy conserved or not. There are 4 systems of classification, and there are 8 types of constraint: scleronomous, rheonomous, okay, holonomic, non-holonomic, bilateral, unilateral, conservative and dissipative. So these are the examples of constraint. Okay, तो ऐसा भी आ सकता है कि identify the constraint. Okay, we are
am giving some examples in the form of in the form of table, so you can identify the constants. Okay, for example, if rigid body is there, so it follows these four constants. Scleronormous, because scleronormous means rigid body do not depend upon the time. Holonomic means it is do not depend upon the velocity. Bilateral means rigid body can be represented in the form of equation. Conservative means the motion of rigid body, it means energy is conserved. Okay, if body is not rigid, if body's shape and size can be changed, that is deformable bodies. Deformable bodies mean the shape of the bodies for which the shape of the shape and size can be changed. The bodies for which shape and size can be changed, they are called deformable bodies. So for example, in deformable bodies, the constant is rheonomous because the constant is depend on the time. This is holonomic because the constant is independent on the velocity. Bilateral means this can be represented in the form of equation. Dissipative, energy is not constant because the body's shape and size is changing. So that's why energy is not constant. So non-conservative means dissipative constant. For example, simple pendulum with rigid support, we have already said that this is scleronormous, do not depend upon the time. Holonomic, do not depend upon the velocity. Bilateral, this equation can be represented. Pendulum के equation हमने देखे थे. Okay, that equation can be represented in the form of equation, the motion of the simple pendulum. So bilateral, and the energy of the simple pendulum can be conserved. So that is conservative. And next is pendulum with variable lengths. Okay, if the length is changing pendulum, so that constant is rheonomous, means it is completely depend on the time. Holonomic means non depend on the velocity, independent. Bilateral means that can be represented in the form of equation, but dissipative, energy cannot be conserved. वैसे ही गैस फिल्ड hollow sphere में scleronormous, holonomic, unilateral क्यों? Because gas is filled in the container, so it can move inside the container or up to the wall of that sphere. Okay, I am talking about the sphere, so unilateral. And the motion is conservative. Expanding or contracting spherical container, if suppose spherical container is not fixed, it is expanding or contracting, it means that it is explicitly depend on the time, rheonormous. Holonomic means it is independent on the velocity. Unilateral means that can be represented in the form of inequalities because the size is changing of spherical container, size is changing, that's why. And dissipative means that energy cannot be conserved because the size of that spherical container is changing. Okay, so these are the examples of constraint and how to identify the constraint particular system. If rigid body is there, deformable bodies is there, simple pendulum with rigid support, a simple pendulum with variable lengths. If gas filled hollow sphere is there or expanding or contracting spherical is there, you can identify the type of constraints associated with the particular system. So this table says that the type of constraint associated with the particular system of the particles. Okay, so these are the constraint. Okay, and they are the examples of the constraint. Okay, so up till now we have studied the constraints. Now we will see what are the forces of constraint. Very easy. If forces associated with the constraint, they are called forces of constraint. ओके, सो कोई भी मोशन होता है किसी भी चीज का, तो फोर्स एसोसिएटेड होता है उस मोशन के साथ. तो जो फोर्स एसोसिएट हो रहा है मोशन के साथ उसको बोलेंगे, अगर वो मोशन कांस्टेंट मोशन है, इफ वी आर लिमिटिंग दैट मोशन, इफ वी आर रिस्ट्रिक्टिंग दैट मोशन, सो दैट विद दैट मोशन इफ फोर्सेस आर एसोसिएटेड, तो दैट फोर्सेस आर कॉल्ड कांस्टेंट फोर्सेस. सो कांस्टेंट्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू द फोर्सेस व्हिच रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम, एंड दिस फोर्सेस आर कॉल्ड कांस्टेंट फोर्सेस. ओके, सो मोशन जहां भी इन्वॉल्व है वहां फोर्सेस इन्वॉल्व है. ओके, अगर मोशन ऑफ सिस्टम को तुमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो जो फोर्सेस उसके साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, उस फोर्सेस को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फोर्सेस, बिकॉज कांस्टेंट फोर्सेस आर ऑलवेज रिलेटेड टू द फोर्सेस और विच रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ द सिस्टम. अगर मोशन को फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बर्ड के मोशन को, बर्ड भी तो किसी फोर्स के साथ उड़ रहा था ना, अगर फोर्स क्या विंग के फोर्स के साथ उड़ रहा था, उसके पंखों को फोर्स था, और उसको मैंने पकड़ के एक कमरे में डाल दिया, तो वी आर कंस्ट्रक्टिंग द मोशन ऑफ दैट बर्ड, सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग दैट द एनर्जी ऑफ दैट विंग्स. ओके, जो उतने ऊंची उड़ने के लिए जो उसकी एनर्जी लग रहा था, जितना फोर्स लग रहा था, उसको मैं रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट फोर्स.
forces of constraint. Okay, so constraint are always related to the forces which restrict to the motion of the system. It means that if motion is constraint motion, so the forces related to that constraint motion are called forces of constraints. Okay, so forces of constraint उसको बोलेंगे. सिंपल एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम का, फिर से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल पेंडुलम का. कंस्ट्रेंट फोर्स इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल ये पेंडुलम है सपोज करो, और ये रिजिड सपोर्ट है, ये पेंडुलम अटैच है. इट मींस दैट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज कांस्टेंट. इट मींस दैट लेंथ क्या कर रही है, जो स्ट्रिंग है उसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि एक धागा अटैच है. ओके, एक रिजिड सपोर्ट है, धागे से पेंडुलम बांधो, तो धागे में क्या आएगा, टेंशन आएगा, टेंशन फोर्स जो पेंडुलम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, दैट इज द फोर्स ऑफ टेंशन. ओके, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंस्टेंट फोर्स. लेकिन पेंडुलम का मोशन कैसे है, लेफ्ट एंड राइट, बट कंस्टेंट फोर्स कैसे है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन. Constant force is in downward direction. If suppose this is the string of the pendulum, so this the tension in the string. Tension in the string means the force acting towards downward direction, because there is a certain mass of that pendulum, point mass. Okay, because of that mass, this string is the force acting on the string in downward direction. That force is called constant force. But pendulum is moving left and right. Okay, the main motion of the pendulum is left and right, but the constant force is acting perpendicular to that left and right motion. Okay, so constant force is always perpendicular to that surface. So just read this statement. Constant force act in the direction perpendicular to the surface of constant, while motion is parallel to the surface. Motion is parallel, but constant force is perpendicular. Because motion is parallel means motion is left to right, but the constant force, that is the force on the string, that is downward force, that is tension in the string, is perpendicular to that force. So here the constant force is force acting on the string in downward direction, that is constant force, and main motion of the pendulum is perpendicular. Okay, so the motion of the pendulum is left to right, and the constant force is perpendicular to that motion of this pendulum. Okay, so constant force which always act in the direction perpendicular to the surface of constant, while the motion is parallel to the surface. Okay, this is the example of the constant force. In case of simple pendulum, the constant force is force acting on the string due to the tension in the string. Tension in the string Q, because of that mass of the pendulum bob, that's why the force is acting in the downward direction, that is tension in the string. Okay, so these are the forces of constraint. Now we will see what are the difficulties associated with the forces of constraints or फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट. मतलब कंस्ट्रेंट को पढ़ते वक्त या फिर कंस्ट्रेंट के कारण सिस्टम में कौन सी डिफिकल्टीज आती है और उस डिफिकल्टीज को कैसे रिमूव करते हैं, दैट वी विल सी द डिफिकल्टीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंस्ट्रेंट और फोर्स कंस्ट्रेंट. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिफिकल्टी. तो दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, दो टाइप के डिफिकल्टीज आती है, दो टाइप्स के डिफिकल्टीज हमें आती है व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कंस्ट्रेंट और फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट. So because of the constraint and because of the force of constraint, we face two difficulties. So what are these difficulties and how they can remove, we will see that. Okay, for example, two types of difficulties are introduced by the constraint. What is first difficulties? We will see the first difficulties first. Okay, first difficulties means consider system of n particle. Okay, so system of n particle, if suppose हम n particles ले रहे हैं, if we are considering the system of n particles. Okay, so what is the force acting on ith particle? N particle means n particle means 1 to n particles. Okay, so if consider a particle that is ith particle, so what will be the force acting on ith particle? We already studied in unit number 1. Okay, the force acting on ith particle is nothing but this is the force acting on ith particle, this is external force and this is internal force. Okay, so this is external force acting on ith particle due to external parameters, and this is internal force acting on ith particle due to jth particle. So this is the total force acting on ith particle. Okay, that is external force plus internal force. Okay, so this is external force and this is internal force. So this internal force acting on ith particle due to jth particle, this is also called constraint force. तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? constraint force भी बोलते हैं. ओके, सो ये constraint force के कारण
ओके डिफिकल्टीज एसोसिएटेड होती है. ओके, इफ देयर इज अ कंस्टेंट, मेन फोर्स क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, and this is the force acting on ith particle. This is external force, but this is internal force. This is also called constraint force, and because of that force the difficulty introduced in the system. So what will be the difficulty? What is the difficulty? We will see that this is the equation number 1. Okay, Fi is equal to Fie plus Fij summation over j. Okay, j equal to 1 to n. Then this is the simple equation, force acting on ith particle, external force plus internal force. If suppose this is equation number 1. Okay, according to Newton's second law of motion, we know that force acting on ith particle, F is equal to ma, mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. So force acting on ith particle is nothing but mi into ai. Okay, mass into acceleration. This we are writing for ith particle. Fi is equal to mi into ai, and ai can be written, acceleration can be written as d2r by dt square. Okay, that is the rate of change of position vector, double derivative of rate of change of position vector with respect to time. So in place of a we can write as d2r by dt square, because velocity is dr by dt, and rate of change of velocity means acceleration. So dr by dt will become d2r by dt square. Okay, so this is from Newton's second law. The force acting on ith particle is equal to mi into ai is equal to mi, ai की जगह पे हम लिख सकते हैं d2r by dt square, because the rate of double derivative of position vector, that is nothing but the acceleration. Okay, now we will put this fi value in equation number 1. So say that this is the equation number 1, fi is equal to Fie plus Fij. So we can put mi into d2ri by dt square in place of this force. Okay, so in putting in equation number 1 we will get this mi d2ri by dt square is equal to Fie plus internal force. This is the equation number. If we look at this equation number 1, this is the internal force. This is also called forces of constraint force, and this is external force. So this constraint force is depend upon the position vector. This is ri is the position vector. So we can write this equation in the form of ri, r and fi. Okay, force. Okay, so this is the equation where the position vector is there and forces of constraint is there. So this equation we can write as the coordinates are connected by the equation of constraint. Okay, this ri is the position vector, and it is connected with these forces of constraint. Okay, this is forces of constraint. Okay, so this ri is not independent, they are depend on the constraint. Okay, depend on the constraint forces. So ri is not independent, the coordinates ri is connected to the equation of constraint, because this Fij is the constraint force. So this ri is not independent, this ri is connected to the Fij, connected to the equation of constraint. So this ri is depend on the time also. So this is the function of, this is, if suppose this is the equation of constraint, which can be written in the form of this coordinate, that is called position vector, that is coordinates and time. Okay, so this is the equation of constraint, and ri is not dependent, ri is not independent completely, it is dependent. So r1, r2, rn are not all independent, they are depend on the constraint, they are depend on the constraint forces. So that's why this is very biggest problem, this is very biggest difficulty. It means that if I want to write the equation of motion, so I have to introduce the constraint forces. अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू एम है, लेकिन ये कहाँ से आ गई टर्म, ये तो कंस्टेंट वाली टर्म है, Fij इंटरनल फोर्स वाली टर्म. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये टर्म कहाँ से आ गई, इसको मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ा, बिकॉज F इज इक्वल टू एम ए होता है, एम और ये मतलब ए, F इज इक्वल टू एम ए. बट फ्रॉम वेयर दिस टर्म कम, so this term is associated with the forces of constraint forces. So always r1, r2, r3, rn depend on the constraint forces, they are not independent. Hence we have to write the equation of motion again by taking the consideration of equation of constraint. मतलब कोई भी equation of motion लिखो, every motion is associated with the constraint. So we have to write the equation of motion by taking consideration of this equation of constraint. This is the equation of constraint, so we have to take the consideration of it,
and we have to write the motion. So this is the difficulty. Every time we have to introduce the constraint, equation of constraint, to write the equation of motion. Okay, this is the first difficulty. Okay, so how this difficulty can be removed, we will see. This is the first difficulty. We have to write the equation of motion by considering the equation of constraint. So this is the equation of constraint. So by considering this equation of constraint, we have to write the equation of motion. मतलब every time अगर equation of motion लिखेंगे तो constraint के equation को हमको consider करना पड़ेगा. तो ये तो एक difficulty हुई ना. Every time equation of motion में constraint के equation को मुझे include करना है, तो that is the one difficulty. Second difficulty क्या है? Second difficulty ये है कि बहुत सारी चीज़ों में हमको constraint के बारे में पता नहीं रहता. Second difficulty is that several times we don't know about the constraint forces initially. Okay, so they are among the unknown of the problem. We don't know about the constraint forces. मतलब कोई अगर एक पत्थर अगर मूव हो रहा है, if particle is moving, okay, the motion of particle is main, but what are the constraint forces? और उस motion, उस पे कौन सी restriction लगी है हमें पता नहीं होता. Okay, if particle is moving in y direction, z direction, but we don't know about the constraint forces. Okay, several times, बहुत बार ऐसा होता है कि constraint forces are not known. We don't know about the constraint forces. Okay, if we don't know about the constraint forces, then these unknown constraint forces are be obtained from the solution of the problem. तो जो constraint forces हमें पता नहीं होते, तो वो constraint forces हमें निकालने पड़ते हैं. ओके, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से वो कंस्टेंट फोर्सेस हमें निकालने पड़ते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ वी डोंट नो अबाउट द कंस्टेंट फोर्सेस, so this is the difficulty. If suppose the system is moving or system is in motion, so we should know about the constraint forces. If we don't know the constraint forces initially, then how can we describe the system of the motion, or how can we describe the motion of the system? So second difficulty is that several times the constraint forces are not known initially. They are among the unknowns of the problem. So these unknown forces we should obtain from the solution of the problem. So उस unknown forces को हमको निकालना होता है. एक example देके समझा रहा हूँ. If suppose a bead is moving on a wire and the force of constraint, that is wire exerting on the bead, we don't know. We don't know the force. What is the force exerting on bead due to the wire? For example, a picture देखो. This is the wire. If suppose this is wire and money, bead is moving on that. So we know about the motion of the bead. Okay, bead का motion मुझे पता है. Okay, bead कौन सी forces से move हो रहा है ये पता है. But the force acting on bead by the wire. Okay, it means that wire is also exerting a force on bead. That we don't know. That is the force of constraint. We know the motion of the bead. If suppose this bead is moving along the wire, we know the motion of the bead. We know the force of the bead. But we know the force acting on wire due to bead. Okay. But we don't know the force exerting on bead due to the wire. Okay. So if the bead is moving on a wire, the force, that is constant force which wire exerted on the bead. मतलब बीड वायर पे जो फोर्स डाल रहा है वो पता है हमें, दैट इज नॉर्मल फोर्स बिकॉज बीड इज स्लाइडिंग ऑन द वायर. ओके, स्लाइडिंग ऑन द वायर, तो दैट इज नोन. बट वायर उल्टा बीड पे जो फोर्स दे रहा है, दैट इज कांस्टेंट फोर्स, दैट वी डोंट नो. So this is the difficulty. We should know about the constant force. If we don't know about the constant force, that is the difficulty. Okay, so if bead is moving on a wire, the force which wire exert on the bead, that we don't know initially. Okay, so this is the difficulty. So there are two difficulty. First difficulty, if we write the equation of motion, we have to introduce the equation of constant. Okay, that is the difficulty. Second difficulty, we don't know about the constant forces. So how can we write the equation of motion for the particular problem of the system? Okay, so these two difficulties can be removed. Okay, so what is the solution of first difficulty? The solution of first difficulty is you have to introduce the generalized coordinates. Generalized coordinates क्या होता है वो आगे इसमें पढ़ेंगे, but first difficulty can be solved by introducing generalized coordinates. And in generalized coordinates there is 3n. n is the number of particles. 3n means 3n number of particles. Particles can move in 3 direction, 3n degrees of freedom, x direction, y direction, z direction. But माइनस एम भी है यहाँ पे.
minus m means number of equation of constraint. So we have to introduce the constraint. So first difficulty can be solved by introducing the equation of constraint, that is m. M means number of equation of constraint for n particle system, and 3n means degrees of freedom for the number of particles. So every particle has 3 degrees of freedom, x direction, y direction, z direction. If we have n number of particles, so we have 3n degrees of freedom. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है उसका एग्जांपल अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. बस अभी इतना जान लो कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, उसको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मूव होने का. अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो उसको 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 इंटू n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3 डायरेक्शन में मूव होने के लिए. ओके, लेकिन n इज इक्वल टू 3n ही नहीं है, सिर्फ माइनस m. We have included minus m, that is related to the equation of constraint. If we introduce the m in the equation, then this difficulty can be solved. The first difficulty can be solved by introducing the number of equation of constraint, that is m. And second difficulty can be solved. Second difficulty क्या है कि constraint force हमें पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे. कंस्टेंट फोर्स अगर मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट नो द कंस्टेंट फोर्स इनिशियली, तो सेकंड डिफिकल्टी का सॉल्यूशन क्या है, कंस्टेंट फोर्स को हटा दो, डिसिपियर कर दो. Okay, if the forces of constraint are not initially, so we have to develop certain idea, certain mechanics in such a way that forces of constraint dissipate. तो हमको क्या करना है, अगर हमको forces of constraint पता ही नहीं है initially, we don't know about the forces of constraint, so we have to develop certain idea, we have to develop certain equation, we have to develop certain mechanics to so that the forces of constraint is disappear. तो forces of constraint हट जाने चाहिए. ठीक है, अगर फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट हमको पता ही नहीं है इनिशियली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक मैकेनिक्स डेवलप करना पड़ेगा और फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट को डिसिपियर करना पड़ेगा. वी हैव टू रिमूव दैट फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट, वी हैव सो दैट दिस फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट डिसिपियर फ्रॉम द सिस्टम. ओके, सो ओनली वी आर लेफ्ट विथ अप्लाइड फोर्सेस. तो सिर्फ हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो जेन्युइन फोर्स है वही बचा रहेगा, कंस्टेंट ऑफ फोर्सेस डिसिपियर हो जाएगी. सो हमको कौन सा मैकेनिक्स फॉर्म करना पड़ेगा, एक नया मैकेनिक्स और आइडियाज. तो इसी के लिए डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल आया. So we can use the D'Alembert principle to remove the constant forces or so that the constant forces can disappear. Okay. So if the constant forces are not known initially, so we have to develop certain ideas, we have to develop certain mechanics. constant forces पता ही नहीं है तो रख के क्या करेंगे, उसको हमको डिसिपियर करना पड़ेगा. तो डिसिपियर करने के लिए आइडिया डेवलप करनी पड़ेगी और उस आइडिया को बोलते हैं डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल. तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट डिसिपियर हो जाते हैं और सिस्टम डज नॉट डिपेंड अपॉन दी फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट. तो हमको जानबूझ के फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट को हटाना पड़ेगा. अगर हमको पता ही नहीं है तो सिस्टम से हटाओ तो क्या अप्रोच यूज करना पड़ेगा, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा. वी हैव टू यूज डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल. सो सिंस द फोर्सेस आर कंस्टेंट आर नॉट नोन, सो वी हैव टू फॉर्मुलेट द मैकेनिक्स सो दैट द फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट इज डिसिपियर्ड. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द अप्लाइड फोर्सेस. तो कंस्टेंट ऑफ फोर्सेस चले गए तो कौन से फोर्सेस बचे रहेंगे, जो हम यूज करना चाहते हैं, जो हम अप्लाइड कर रहे हैं, जो जिस फोर्सेस के साथ सिस्टम मूव हो रहा है. इफ सपोज बीड is moving along the wire, so bead is exerting a force on wire, that is the main force. But opposite, wire is exerting a force on bead, that is opposite constant force. So we have to remove that force. The force acting on bead due to wire, we have to remove that force. So only force will remain, that is the force exerting by the bead on wire, that will remain. That is the main force, that is called applied force. Okay, so we are left with the applied force if we disappear the forces of constraint, and we have to use certain new approach, certain new mechanism, certain new formula, that is called D'Alembert principle. Okay, so इस तरीके से दो डिफिकल्टीज हैं, तो दोनों डिफिकल्टीज को इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट डिफिकल्टी रिमूव करने के लिए कंस्टेंट के इक्वेशन में m लाओ, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट को लिख दो. ठीक है, और सेकेंड में कंस्टेंट को ही हटा दो. ठीक है, तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल यूज करो. तो इस तरीके से वी हैव सीन दैट व्हाट आर द कंस्ट्रेंट, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट एंड व्हाट आर द डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रेंट. 2 डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रेंट एंड वी हैव सीन द सॉल्यूशन टू सॉल्व दीज 2 डिफिकल्टीज. फर्स्ट डिफिकल्टी कैन बी सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म m, that is the number of equation of constant, and second difficulty can be solved by just disappearing the constant by using D'Alembert
principle. Okay, so